हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोस्कूल। दिस इज गायत्री। सो आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इन दिस सेशन वी लर्न व्हाट आर द टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन पार्ट सी ऑफ CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। If you are new to my channel and have not subscribed yet, then please do subscribe and stay connected. So चलो देखते हैं क्या है टिप्स। द फर्स्ट टिप इज न्यूमोनिक्स इज द बेस्ट वे टू लर्न। सो न्यूमोनिक्स का मतलब क्या है? न्यूमोनिक्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन के टाइम में ज़्यादा प्रेशर होता है। उस टाइम में हमें किस चीज़ को याद करने के लिए अगर हम टॉपिक को न्यूमोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो वो आसानी से रिकल होता है एग्जामिनेशन के टाइम में। CSIR के नेट एग्जामिनेशन बहुत ही वास्ट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना है। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? हम अगर निमोनिक्स बना लें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, देन वो बहुत ही आसान होता है रिमेंबर करने के लिए और एग्जामिनेशन के टाइम में रिकॉल करने के लिए। आप अपना खुद का निमोनिक्स भी बना सकते हो। निमोनिक्स बनाने का ट्रिक है कि आप ऐसे बनाओ कि जो आप विजुअलाइज कर सकते हो, और आप कुछ फनी वे में भी निमोनिक्स बना सकते हो। Okay, so always try to remember important information through mnemonics. Mnemonics is the best way to learn. And the second point is practice previous year questions. You know the proverb, practice makes perfect. So आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो क्या होगा ना, आपका एनालाइज करने का जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका एनालाइज करने का एबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और एक पॉइंट है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि CSIR में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्टली इन CSIR नेट एग्जामिनेशन ज़्यादातर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो रिपीट नहीं होता है, मगर वो क्वेश्चन को रिफ्रेन करने का मतलब ये है कि उस सेंटेंस को मॉडिफाई करके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वो पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। ओके, यू विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन। ओके, लेट्स नो द थर्ड पॉइंट, चूज क्वेश्चन वाइजली। इसका मतलब ये है कि CSIR एग्जामिनेशन में पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आउट ऑफ 75 you have to answer only 25 questions. Okay, that means you got a lot of options. एंड ये जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो हमें अपना नॉलेज के साथ साथ हमें वाइजली भी क्वेश्चन को चूज करना चाहिए। CSIR नेट का सिलेबस तो बहुत ही फास्ट है, उसमें 13 यूनिट्स है। आप लोगों को 5 से 7 यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो जब एग्जामिनेशन में आप पार्ट सी में क्वेश्चन चूज करते हो ना, तो आप पहले उस टॉपिक के और उस यूनिट पे जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को चूज कर लो। सो आपको आसान होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, और एक टिप है, आप जब क्वेश्चन चूज करते हो ना, ज़्यादातर वो जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कि लाइक प्रीफर टू आंसर कॉम्बिनेशन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। पार्ट सी में तो बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन के नीचे ऐसे लिखा होगा कि चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन लाइक A, B, C, C, D. So try to prefer to answer this type of question because that will be very easy to solve. Okay, अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि वो ये किस तरह से आसान होता है कि सॉल्व करने के लिए। सो वी विल सी एट द एंड ऑफ द स्लाइड कि वो कितना आसान होता है सॉल्व करने के लिए। ओके, आई विल सॉल्व सम प्रीवियस ईयर CSIR नेट 2020 क्वेश्चंस। Then the last point is try to attempt maximum questions. पार्ट सी में मैक्सिमम के मतलब क्या है? 25 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है। उससे ज़्यादा अगर आप अटेंड करते हो तो भी CSIR नेट वो कंसिडर नहीं करने वाला है। सो आपको 25 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। एज की पार्ट सी इट इज द very mass scoring part, so just try to attempt maximum question as you can. Like if you are attempting the 25 questions, then that's good. Otherwise just try to attempt more than 20 questions. Okay, so let's see some of the previous year that is 2020 CSIR net question. These questions are asked in the evening session, and I will show you how easy to solve the combination option based questions. So this is the first question. Okay, Kelvin-Benson cycle is divided into 3 phases, namely carboxylation, reduction and regeneration. The following statements are related to
the three phases of Kelvin-Benson cycle. So this question, it is all about the Kelvin-Benson cycle. So the first option is the product of light reaction ATP and NADPH is utilized in the carboxylation phase. Okay, so let's see what happens during the carboxylation phase of Kelvin cycle. ये आप देखते हो, ये है Kelvin cycle. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, प्लांट वो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को 5 कार्बन कंपाउंड राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ वो कंबाइन होगा. आफ्टर दैट इट विल फॉर्म ए 6 कार्बन कंपाउंड and that 6 carbon compound, it is unstable. Okay, so that 6 carbon compound, it will break down into 2-3 carbon compounds. That 2-3 carbon compounds are known as the phosphoglycerate. And see, during this carboxylation phase there is no use of ATP and NADPH, so this one is wrong. So option A is wrong. So let's say the option. In option 1 and 3, okay, there is A, so we can directly eliminate 2 options because option A is wrong. So now we have to choose only 2 options, either option 2 is correct or option 4. So let's see the question, option B. 6 molecules of 3-phosphoglycerate is converted into 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate in reduction phase. This one is correct. Here you can see this one is the reduction phase. In the reduction phase, ATP and NADPH are used, and the 3-phosphoglycerate, it is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so option B is correct. So for this question, correct answer is option 2. Okay, you can solve it within a minute. Okay, it's very easy to solve combination option based questions. Okay, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या है. The action of aldolase enzyme for the production of fructose 1,6 bisphosphate takes place in the reduction phase. It's not in the reduction phase, it is in the regeneration phase. Option D, it is correct. So what is that? Is the formation of 7 carbon compound pseudoheptulase 7 phosphate takes place in regeneration phase. Yes, this one is correct. So चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Given below are proposed analogous structure among organisms. So analogous structure का मतलब क्या होता है? Analogous structure का मतलब ये है कि origin वो different होता है but their functions are similar, that are known as the analogous structure. Homologous structure में क्या होता है ना, origin जो है वो similar होता है. So यहाँ पे क्या हुआ, analogous structure मतलब different origin but similar function. So wings of birds and bats, it's an analogous structure because it has similar function. Wings of bats and tetrapod digits, no, this is not analogous, this one is homologous structure, so this one is wrong. So the correct answer is option A is correct and option B is wrong. So option 2, here it is eliminated, so the correct option, it will be either 1, 3 or 4. So let's see the option C. Tendrils of beetle and tendrils of pumpkins, these are homologous structure because they have the similar origin. They are originated from axillary board of stems. So this one is wrong. So option C is wrong. That means option 1 and option 3 now eliminated. So the correct answer, it will be option 4. Okay. Tubers of potatoes and sweet potatoes, they are analogous structure. Okay, because they have the different origin. Sweet potato, it is a root tuber, where the potatoes, these are stem tubers. So this one is correct. Option E, fin of fishes and flippers of whale, these are analogous structure. So the correct answer is option 4. चलो और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं. The following information refers to ecological interaction. Okay. Column X and column Y. A is the bass introduction into aquatic systems. चलो आपको पता भी नहीं है कि bass introduction into aquatic system इसमें से क्या होगा, तो उसको छोड़ दो. ओके, चलो बीवर्स
वीवर्स क्या है? वीवर्स एक कीस्टोन स्पेसिस है. ओके, ये तो आपको पता ही होगा. बी इज 3 कीस्टोन स्पेसिस. ओके, लेट्स सी. Okay, here you can see the B is 3. So directly you can choose that option 2 is the correct answer. Okay, but let's see the other options. Sea birds such as puffins. चलो वो भी आपको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है. येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स इन वास्प, ये क्या होगा? ये है एपोसिमेटिज्म. एपोसिमेटिज्म मतलब क्या है ना, एनिमल्स वो एक कलर और मार्क शो करते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए. ओके, so this one is D is option 2. D is option 2. Okay, that one is also correct. So A is bass introduction into aquatic system. It is a trophic cascade. And seabirds, that one is the bioaccumulation. अगर आपको ये पता है कि बेवर्स क्या है, कीस्टोन स्पेसिस है, देन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. पता है ये क्वेश्चन पार्शी का है तो मतलब 4 मार्क्स का है, तो देखो कितना आसान है. तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग ये ट्राई करो कि कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को, कॉम्बिनेशन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने के लिए. और पार्शी में जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ लो. फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको समझ में आएगा. सेकेंड टाइम वो पढ़ो कि आप जो समझ रहे हो क्वेश्चन को वो सही है कि नहीं. कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ पे एक इनकरेक्ट और फॉल्स ऐसे वर्ड होता है ना, हम लोग उसको मिस कर जाते हैं. इसके वजह से हमारा आंसर भी गलत हो जाता है. अगर पार्शी में एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, मतलब यह है कि आपको 5 मार्क रिड्यूस हो जाएगा. सो आप लोगों को क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए. So let's see the other question, and this question is from developmental biology. CSIR NET का जो developmental biology का जो syllabus है वो मैं cover कर चुकी हूँ. You will get that in my YouTube channel. I have 32 videos for developmental biology, and each video with solved previous year CSIR NET questions, so that will definitely help you a lot. So मैं recommend करूँगी कि आप एक बार developmental biology का playlist में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए. सो ये क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं. द कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ एनग्रेल्ड एंड विंगलेस इज मेंटेन्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन एनग्रेल्ड एंड विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टुवर्ड्स द इनिशिएशन cascade of events that occur for this interaction. Okay, so this one is for the segmentation of Drosophila. Okay, option A, the engrelled gene is expressed in cells where neither even skipped or nor fusitaraju gene is active. Okay, so here you, in the diagram you see this one is EN for the engrelled gene. It is active. Engrelled gene, it is expressed where even skipped and fusitaraju is present. So what is here it is written? Here it is written engrelled gene is expressed in cell where neither even skipped or nor fusitaraju gene is active. So this one is wrong. Okay, so option A is wrong. So we can eliminate option 1 and option 3. Okay, so the correct answer, it will be either option 2 or option 4. So let's see the B. The wingless gene is expressed in those cells that contain high concentration of either even skipped or fusitaraju wingless. You see here it is wingless. Wingless gene that is expressed where both even skipped and fusitaraju gene is absent. Okay, they are mostly expressed where there is presence of a slopy paired. So this one is also wrong. So option B is wrong. We can eliminate here this option. So the correct answer, it will be option 4, that is C and E. See, we can easily solve this question. C and E is correct answer. But let's see the option C and E, what it is. Wingless is secreted protein diffuses into surrounding and bind the fragile receptor protein and activate engrelled gene via armadillo. Yes. See here the wingless gene, it binds to the receptor, fragile receptor, and activate the engrelled, okay, via armadillo. So this one is correct. Option D, hedgehog protein activate the transcription of engrelled and also activates its own transcription. No, in hedgehog protein it activate the transcription of wingless genes.
not engrilled. So this one is wrong. Hedge of protein diffuses from the cell. Hedge of protein, here you can see it is diffuses from the cell and bind to the receptor, PAST receptor, and enable the transcription of wingless protein. So this one is correct. So this video will definitely help you in your examination. So these are my point of view. I think this will definitely work in examination. So bye bye. See you in my next video.